This is the beautiful looking Yezdi Scrambler just standing right in front of you. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Avishkar and आज हमारे पास है Yezdi की Scrambler एंड ये इस सेगमेंट की फर्स्ट एवर बाइक है बिकॉज इस प्राइस रेंज में स्क्रैम्बलर और कोई भी कंपनी नहीं देती है. Come to the garden, darling, I will wait for you. Here I will sit till morning like true lovers do. Come to the garden, darling, I will wait for you. Here I will sit till morning like true lovers do. Come to the garden, darling, I will wait for you. Here I will sit till morning like true lovers do. Wait for you. And let me tell you, this is like very unique and this is just the initial first ride impression of this machine. So इसके ऊपर मैं एक detailed ride review बनाऊंगा but जैसा कि आप देख सकते हैं, I'm just riding it. This is very comfortable. The seat height is at 800 mm, which is quite good for a motorcycle of this segment. And this also weighs somewhere around 185-186 kilograms. Plus this do comes with a liquid cooled engine. So there's a 334cc single cylinder liquid cooled engine which comes with a 6-speed gearbox. And the initial impressions are pretty nice. You are sitting like a very commanding view. Upright बैठे हैं. Your foot pegs are also quite nice. एकदम straight बैठे हुए हैं आप मेरे साथ, giving you a very good view what's behind. The handlebars is just wide and straight upwards, so it gives you a very commanding view and control of the road and the motorcycle. Plus, talking about the pickup, this bike is quite powerful. Plus the brakes are also pretty nice. So you get a 320 mm front disc and 240 mm rear disc. Comes with dual channel ABS standard, and you do get riding mode. So you have buttons to like maneuver through the menu. You have off-road, road mode and everything. So pickup wise काफ़ी अच्छी है and scrambler है, so very easy to maneuver. Handlebar काफ़ी मुड़ जाता है and braking also is quite nice. प्लस फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँगा तो 12.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक है. यू आर गेटिंग अ साइड माउंटेड इंस्ट्रूमेंट कंसोल, सो राइट हैंड साइड पे है ये, वेरी सिमिलर टू जावा. सो ये Yezdi जो है आपको जावा के शोरूम्स मिल जाएगी. एंड अभी मैं लाइक पुणे में यू कैन विजिट शक्ति ऑटोमोटिव जावा शोरूम. जावा एंड Yezdi दोनों ही मिल जाएगा आपको उनके पास. एंड यू टर्न वगैरह करने में दिस बाइक इज़ वेरी नाइस मैन. प्लस पिकअप वगैरह भी अच्छा है. अगेन इट्स अ लिक्विड कूल्ड इंजन, सो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट कि आपका जो इंजन हाई रेप करेंगे तो प्रॉब्लम होगा या नहीं, बिकॉज लिक्विड कूल्ड इंजन्स आर यूजुअली क्वाइट हाई रेविंग. इवन दो इट्स अ सिंगल सिलेंडर, आप इसको थोड़ा हाई रेप कर सकते हैं. एंड इसमें आपको डेडिकेटेड हैजार्ड लाइट स्विच भी मिलता है. Plus the indicator design is also quite nice. So I'll just stop here. I'll just take a photograph of this, which I think will be the thumbnail of this video. So I'll just stop here, just grab my phone, and this is the beautiful looking Yezdi Scrambler just standing right in front of you. Let me just take a quick snapshot of this beautiful machine, and there you go. Looking very unique man, very unique. So let's hop on again. And जैसे आप देख सकते हैं ओवरऑल गाड़ी में आपको डबल एग्जॉस्ट मिल जाता है which sounds pretty nice. You get a flat seat which is again very comfortable. बैठते ही आपको 800 mm की सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा लो लगेगी, सो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें. इंस्ट्रूमेंट कंसोल गिव्स यू
ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ओडो, टाइम, कितने RPM पे है, कौन से गियर पे हैं, ट्रिप A, ट्रिप B। एंड इसको चलाने में यार जो अलग फन है ना, लाइक यूजुअली वी आर नॉट यूज टू राइडिंग अ स्क्रैम्बलर, टू राइड अ स्क्रैम्बलर बेसिकली। एंड स्क्रैम्बलर जब आप फर्स्ट टाइम चलाएंगे, you will just love it, how it controls man, just amazing। so ये था इसका एक फर्स्ट राइड इम्प्रेशन। इसके बाद मैं अभी आपको इसका एक वॉक अराउंड स्पेसिफिकेशंस पार्ट डाल देता हूँ आगे वीडियो में, सो दैट यू गेट एन एग्जैक्ट आइडिया कि कैसी है गाड़ी। सो इसके ऊपर मैं एक डिटेल राइड रिव्यू जल्दी लाने वाला हूँ। एक्चुअली कैसा है गाइज़ कि गाड़ी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि मेरे को अच्छे से टाइम नहीं मिल पा रहा है इसको एक अच्छे से रिव्यू देने का, बिकॉज अगेन डीलरशिप पे भी थोड़ा सा प्रेशर है कस्टमर्स को लेके, एंड कस्टमर कम्स फर्स्ट। सो थोड़ा टाइम दीजिए गाइज, इसके ऊपर डिटेल राइड रिव्यू विल बी कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।